Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 15 and the name of our unit is Objects in the Sky. Today I am going to review this unit क्योंकि हमने इस unit के तमाम SLOs complete कर लिए हैं. But before moving on towards the review, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So what do you see on sky at night and daytime? यानी कि आप दिन और रात में कौन कौन सी चीजें आसमान पर नोटिस करते हैं? वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो कि हमने सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं. सो आज हम इन तमाम को रिवाइज करेंगे विद द रीडिंग पेजेस एंड बाय द एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द असेसमेंट शीट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था कि डे टाइम में कौन कौन सी चीजें हमें आसमान पर नजर आती हैं. सो व्हाट डू यू सी ऑन स्काई एट डे टाइम? वी ऑब्जर्व द सन. When does sun rise? So sun rises in the morning at around 5 a.m. in the morning. And what does sun give us? Sun gives us heat and light. Then we discussed about what do we observe at night time. So what do we observe at the night sky or see at the night sky? We see stars and the moon. And what do they give us? They give us light. And when do moon and stars are visible? They are visible at night time. So my dear students, then we did a home activity about the different phases of moon. यानी कि चांद हमें पूरा महीना एक जैसा नहीं नजर आता, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला हो जाता है. इसके अलावा हमने ये भी नोटिस किया कि डिफरेंट टाइम्स पे ये इसके जो औकात हैं वो चेंज हो जाते हैं. यानी कि इसकी जो राइजिंग ऑफ द मून है, चांद के निकलने का जो वक्त है, वो दिन बदलने के साथ साथ चेंज होते जाते हैं. So my dear students, we also made a project on day sky and night sky. I hope आपने भी बनाया होगा. अगर नहीं बनाया तो re-watch the previous lecture और फिर आप ये project जो है complete करें. So my dear students, now is the time for the practice. जो आपकी evaluation है, test है आपका, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, write down your name and the roll number and answer the following by choosing the correct option. Which one we see at night? Star, sun, sunlight. Which we see at daytime? Sun, stars, moon. In morning time, sun is at high, down, disappear. Sunlight is dim, bright, both. Moonlight is dim, bright, both. Which gives us heat or light? Sun or moon? Both sun and moon. Morning stars starts with sunset, sunrise, moonrise. Moon and stars are visible at day, at night, both. In the evening, sun is down, high, none of these. We cannot see at daytime. Stars and moon, moon, sun. So my dear students, you will pause the video and you will quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, now we will quickly move forward towards the homework. So for homework, you will do picture reading given on page number 137 in your books. So my dear students, इस यूनिट में हमने तमाम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जो कि आपको आसमान पे नज़र आते हैं मुख्तलिफ औकात में. कुछ आपको दिन में देखने को मिलते हैं, कुछ आपको रात को देखने को मिलते हैं. दिन में हम सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाते हैं और ये बहुत तेज़ होती है और हमारे लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है, इम्पॉर्टेंट है. एंड एट नाइट टाइम वी ऑब्जर्व स्टार्स एंड द मून. और जो मून है इसके जो राइजिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है और इसी तरह इसके जो फेजेस हैं, यानी कि ये पूरा महीना जो है इट डज़ नॉट सीम ऑफ सेम साइज, इसका साइजेस जो है वो भी डिफरेंट होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने तमाम लेक्चर्स को गौर से सुना होगा, अपनी एवेल्युएशन को कंप्लीट किया होगा. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.